Good evening, everyone. This is Jammu and Kashmir News Analysis. Yesterday was 5th of August 2024, which marked the 5th anniversary of the abrogation of Article 370. So, in this lecture, we will discuss about the changes which were brought to the UT of Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370. And during this span of 5 years, what major changes took place in the UT of Jammu and Kashmir, जिसमें हम बात करेंगे various constitutional changes के बारे में. Then we will talk about the laws which were extended to Jammu and Kashmir. Also, we will talk about the local self-government. Then we will talk about the power generation. Also, we will talk about various irrigation schemes. Then we will also talk about various local product promotions and investments and how the traffic is being managed. And then we will talk about the tourism also. In addition to this, हम देखेंगे how the security scenario of Jammu and Kashmir has been changing, in which we have some data that has compared the data of 2004 to 2014 wala decade to 2014 to 2024 wala decade. So let's first see the security scenario और क्या data हमें predict करता है, क्या increase हुआ है, decrease हुआ है, what has been the change in the security grid. अगर हम बात करें terrorist initiated incidents की, तो they have been reduced. पहले जो है ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. You just have to remember that around 70% of the terrorist related incidents have been reduced in this decade. Next is the civilian deaths. अगर हम civilian deaths की बात करें तो they have also been reduced to around 67%. Death of civilians and security forces पहले था, and death of only civilians exclusively have been reduced by 80%. And security forces जो है उसमें मार्जिनल नहीं बोलेंगे, लेस देन द सिविलियंस अटैक्स जैसे कि इंक्रीज हो रहे हैं तो 44% हुआ है. This is very important. Stone pelleting, which was done by the organized stone pelleting, organized strikes, death of civilians, these all have been reduced to zero. This is the major achievement for the government of India. Now, how this improvement in the security grid was seen, इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए थे. द फर्स्ट स्टेप वाज दैट which was to keep Kashmir on the priority of the government, and of course zero tolerance policy against terrorism. ये important है because right now also we are not negotiating on anything. We are not negotiating unless and until the terrorist activities are being stopped by the neighboring countries. We also have a zero terror plan and area domination plan. Then we have the demolition of terror ecosystem, in which various funding ecosystems, various over the ground workers were being demolished. And the de-radicalization efforts of the youth and crackdown on the terror finances, जिसमें से बहुत सारे जो टेरर फाइनेंसेस थे उनको अटैच किया गया, फ्रीज किया गया, बैन किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को. And there was also UAPA being imposed for qualitative disposal effort, in which monitoring was being done. तो ये सारे मेजर्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं. इन एडिशन टू दिस देयर वर पॉजिटिव आउटकम्स आल्सो. फॉर एग्जांपल टूरिस्ट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, अराउंड 2.11 crores इन 2023. श्री अमरनाथ जी की यात्रा अभी 4.5 लिखा है इन्होंने, बट ऑलमोस्ट 5 लाख क्रॉस कर चुका है. G20 tourism group G20 has been successful in Srinagar, and Muharram procession was also carried along the traditional route in Srinagar. Now coming to the various constitutional provisions, अगर हम बात करें तो it established abrogation of Article 370 established one constitution, one national flag and one prime minister. Earlier there was the constitution of J&K, there was a flag of J&K. All these were being discarded and now we have one constitution जो कि हमारा भारत का संविधान है. We have one flag, that is our national flag, and one prime minister. It ended the two darbar tradition, that is the darbar move, वो जो कि financial बहुत ज़्यादा crunch होता था state पे, and it was around 400 crores. It was totally digitized, and several languages were being declared official, जिसमें Kashmiri, Dogri, Hindi, Urdu, and English. In addition to this, there was this Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill being passed in 2023.
जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल था उसका अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें हमने 2 मेंबर्स फ्रॉम डिस्प्लेस्ड कश्मीरी माइग्रेंट्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें 1 वीमेन होगी और 1 ऑफ द पर्सन्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑल्सो, जिनको हम वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज भी कहते हैं। एंड अभी जो 1/3 पार्लियामेंट में 1/3 एक्सटेंशन ऑफ दी women सीट्स हुआ है, वो जे के लेजिस्लेचर में भी होगा व्हेन द लेजिस्लेचर विल बी सेलेक्टेड। ऑल्सो अगर हम देखें जो लॉज एक्सटेंड हुए विच वेर नॉट एक्सटेंडेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द यूटी वॉज एन erstwhile state, it was the right to education, right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement, Forest Rights Act, STSC Prevention of Atrocities Act, Whistleblower Protection Act, Juvenile Justice Act and National Commission for Minorities Act 1992। अगर हम बात करें strengthening of पंचायती राज सिस्टम की, तो देयर वाज दिस जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 व्हिच वाज अमेंडेड। इसमें जो है हमने डीडीसीज को इंक्लूड किया, बीडीसीज को इंक्लूड किया और इनका जो है इलेक्शन टर्नआउट भी बहुत हाई रहा। अगर हम बात करें पंचायती राज एक्ट की, तो दिस इज 3 tier। यहाँ पे डीडीसीज है, यहाँ पे आपके जो है बीडीसीज है एंड दिस इज पंचायत। अगर हम बात करें पंचायत इलेक्शंस की, तो वोटर टर्नआउट बहुत ही अच्छा रहा, अराउंड 74%, दैट इज 2/3 ऑफ द पीपल वोटेड एंड देयर वाज अ वेरी गुड एक्चुअली दिस वोटर टर्नआउट इन द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें अराउंड 98% टर्नआउट था। And then there was no incidents of the violence also, and many funds were distributed among the urban local bodies and 2 unique initiatives were launched. One was the aspirational panchayat development program and the other was aspirational city development program। उसके बाद बात करते हैं पावर जनरेशन की, तो फॉर द नेक्स्ट 5 years वी हैव अ टारगेट ऑफ 5000 मेगावाट्स, जिसमें से हमने इस बार हमारी पीक डिमांड थी अराउंड 3050 मेगावाट्स, लास्ट ईयर इट वाज ओनली 2800। कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इन 5 years में अंडर कंस्ट्रक्शन थे, दैट वाज 1000 मेगावाट्स पकल डुल हाइड्रो प्रोजेक्ट, another was 850 megawatts Ratle, 540 megawatts Kwar hydro project, 624 megawatts Kiro hydro projects। इरिगेशन स्कीम्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तभी बैरेज बनाया गया, त्राल लिफ्ट प्रोजेक्ट बनाया गया, दीज आर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये 4 पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा अपने आंसर्स में, इंटरव्यू में। दिस कैन प्रूव वेरी गुड एज अ वेरी गुड, जो है आपको एक प्लस पॉइंट, एक ब्राउनी पॉइंट दे सकता है। वन इज द जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकंड इज द जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, थर्ड इज द जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स development policy, and fourth is the Jammu and Kashmir wool processing, handicap crafts and handlooms policy। इन चारों policies को मैं different video में explain करूंगी, otherwise this video will go a little bit lengthy। So coming to the investment, अगर हम investment की बात करें तो अभी it has crossed around 2 lakh crores, तो तब पुराने बजट के अकॉर्डिंग it was 1,19,000 crores। नाउ लोकल प्रोडक्ट्स को कैसे हमने जो है बढ़ावा दिया, थ्रू द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्यूआर कोड बेस्ड मैकेनिज्म फॉर जीआई ऑथेंटिकेशन ऑफ कश्मीरी कारपेट्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। 10 क्राफ्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा जिनको जीआई टैग मिला है। वन इज द पश्मीना, सेकंड इज द कारपेट, देन सोजनी एम्ब्रॉयडरी, देन वॉलनट वुड कार्विंग, कश्मीर पेपर माशी, Kanni shawl, Khatamband, Basoli paintings, Basoli pashmina, and this is important, which was recently included. That is Rajouri chicory wood, and another one is Doda's Gucci mushroom, which are also GI tagged. Basmati rice is grown in RS Pura. And we have the National Saffron Mission, which increases the crop yield from 1.88 kilograms of per hectare to 4.50 kilograms of per hectare. Then we have the One District One Product and the 2 schemes. Now coming to the development of the tourism, अगर हम बात करें तो अभी it has crossed around 2 crores and 11 lakhs. It has been given as an industrial status, and there was also G20 tourism working group, and there was private investment up to 250 crores.
75 एडवेंचर सर्किट्स को ओपन किया, हेरिटेज सर्किट्स को, पिलग्रिमेज एंड सूफी सर्किट्स को भी. These policies are important. One is the homestay policy, जिसमें ब्रेड एंड बास्केट बेस्ड टूरिज्म होता है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी गांव में जाते हो तो आप वहां पे उनके घर में रहोगे एंड यू विल पे द हाउस होल्ड. देन वी हैव द फिल्म पॉलिसी, हमने न्यूज एनालिसिस में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. देन वी हैव द हाउस बोट पॉलिसीज. ये सारी पॉलिसीज मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी. Under the film policy, 300 movies, web series have been permitted to be shooted. Then we have the Jammu Roofway project. It was completed at a cost of 75 crores. Then we in social welfare, we have the ST women, and these all were given equality and fairness. There was also reservation being provided. अगर आप देखेंगे पहाड़ी people were being provided 10% of the reservation. Then transgender citizens were covered under the social security schemes for the first time. And अगर हम वेरियस स्कीम्स की बात करें जो टारगेट ओरिएंटेड है तो वी हैव अचीव द टारगेट ऑफ हाउसिंग स्कीम विच इज 2 लाख हाउसेस आर बिल्ट. स्वच्छ भारत मिशन में वी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ODF, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री. देन वी हैव द नेशनल हेल्थ मिशन जिसमें हमने 92% ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड 96% ऑफ द इम्यूनाइजेशन. आयुष्मान भारत में 1 करोड़ बेनिफिशियरीज आर एलिजिबल एंड ई कार्ड्स में अराउंड 85 lakhs को इशू की गई हैं. जल जीवन मिशन में भी 99% of the villages are covered under the piped water structure. Then 4 ग्राम स्वराज जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उज्ज्वला स्कीम, उजाला स्कीम, इंद्रधनुष, सौभाग्य, इन सब स्कीम्स में we have achieved 100%. So these are some of the initiatives which have been taken by the government after the abrogation of Article 370. ये important है for your interviews, for your mains also, as well as some PYQ based questions in the GKSSB. I think that is all for this lecture. Have a good day ahead.